So we were doing the theorem on chi-square distribution, which states that the arithmetic mean is normally distributed with mean mu and variance sigma square by n. So first one that I want to prove that a sample mean follows normal distribution with mean mu and variance sigma square by n. And number two, n s square by sigma square is a chi-square variate with how many degrees of freedom? With n minus 1 degrees of freedom. Secondly and thirdly, they both are independently distributed. ठीक है जी? So first of all, we have in the previous lecture we have taken the joint probability differential. Then we have taken the transformations, and in particular we have put a1 a12 as 1 by under root 10. Then we were on this statement summation of yi square. After the linear transformations are orthogonal, then we will use summation of yi square. This is equal to summation I running from 1 to n xi square. So we were doing the theorem from this step that the linear transformation is orthogonal. It means summation of yi square is equal to summation I running from 1 to n xi square. So now I will introduce some of the xi square plus x bar square minus 2i 2xi x bar. So I have introduced, it means I have to take the in subtraction. So first I will take 2xi, मैंने माइनस किया तो यहाँ मैं क्या करूँगी प्लस, राइट. फिर यहाँ पे प्लस हुआ है तो हम यहाँ पे करेंगे माइनस. So this will become summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square plus, जब आप इसको ओपन करेंगे, this is 2 x bar summation xi, right? This is summation x bar square. So this will remain as it is, summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square plus 2x bar into summation of xi. This is n into x bar. So this is summation. X bar is independent of I. So this becomes how many times? N times. So ultimately this total expression becomes summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square plus n x bar square. So thus, summation I running from 1 to n yi square is equal to summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square. And what is the value of nx bar square? From start, it is y1 square. So it implies you can write it as y1 square plus summation I running from 2 to n yi square is equal to summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square plus y1 square. It will be get cancelled. So you are left with summation I running from 2 to n yi square. This is equal to summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square, right? Let it be. The first expression was y1 is equal to under root n into x bar. It was star, and let it be double star. Now we will also want to solve what is the value of summation of I running from 1 to n xi minus mu whole square, because each xi is following the normal distribution. Right now we have transformed the variables from x to y. So now we will convert this expression in terms of y. So this is equal to summation I running from 1 to n xi. So you will introduce xi minus x bar plus x bar minus mu its whole square. Right? So this is equal to summation I running from 1 to n. So this is a square, this is b square plus 2ab. xi minus x bar whole square, right? Plus समेशन. अब ये दोनों ही कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे और समेशन n टाइम्स हो जाएगा. सो यू विल गेट n into x bar minus mu whole square. रह गया अंदर समेशन I running from 1 to n xi minus x bar into x bar minus mu. So when the deviations are taken from mean, their sum is equal to 0. So this part will become 0. So we are left with, it implies summation I running from 1 to n xi minus mu
whole square. This is equal to summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square plus n times x bar minus mu whole square. So from double star, it has the value summation I running from 2 to n yi square, and this will remain same x bar minus mu. This is by double star. So wherever we have this value in the next step, we will put it as summation I running from 2 to n yi square plus this expression. Now the Jacobian of transformation, but we have already find Jacobian of transformation of this kind of variables. That comes out to be in the previous theorem that we have done, J is equal to plus minus 1. Thus, now we will find the joint probability differential of transformed variables. Thus, the joint density function or probability differential of x1, x2, xn. This was transforms to dg y1, y2, yn. This is dg of x1, x2, xn into Jacobian of transformation. So we have in the very first step, we have the joint probability differential of x1, x2, xn. So I'm writing here 1 by sigma under root 2 pi raised to power n e raised to power minus 1 by 2 sigma xi minus mu its whole square, right, into d of x1, d of x2. We will not put d of x1, d of x2. Here you will, when you will write, it will convert it into d of y1, d of y2, so on up to d of yn. जब भी हम ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल का पीडीएफ लिखते हैं, सपोज करो आपने ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएबल y है जिसका पीडीएफ लिखना है, सो इट इज द पीडीएफ ऑफ द रेंडम वेरिएबल x इनटू जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अगर आप जॉइंट डिफरेंशियल में लिख रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे d ऑफ, यहाँ पे सपोज करो p ऑफ x लिया इनटू जैकोबियन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, साथ में क्या आएगा dx, तो सॉरी dy आएगा, क्योंकि वेरिएबल अब आपका कौन सा चल रहा है, y. So Jacobian of transformation here is 1. So this is 1 by sigma under root 2 pi whole raised to power n. Put the value here. This is -1 by 2 sigma square. So पीछे हमने क्या वैल्यू कैलकुलेट की इसकी, वही हम यहाँ पे पुट करेंगे. I running from 2 to n yi square plus n into xi minus mu x bar, sorry not xi, it's x bar minus mu its whole square into, so they have written Jacobian of transformation into dy1, dy2, so on up to dyn. So अब हम इसको दो अलग अलग पार्ट्स में सेपरेट करेंगे. So this is equal to. Now what we will do, एक एक्सप्रेशन देखो आपका ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाद में सेटअप करते हैं, राइट. ये तो कांस्टेंट है. अब ई जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 by sigma this into yi square. ठीक है जी, into e raised to power, sorry, summation of yi square, summation I running from 2 to n yi square, और ये बनेगा -1 by 2 sigma square, राइट. समेशन वहीं आएगा जहां पर वेरिएशन है, और दूसरा एज इट इज x बार माइनस म्यू होल स्क्वायर, राइट. अब हमने ये जो है, ये जो कांस्टेंट है, ये दोनों के साथ डिवाइड करना है, सो दैट ये वाला पोर्शन हम देखेंगे क्या बन रहा है, और ये वाला भी क्या बनना चाहिए. ये दिस बिकम्स एक्स बार. यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एक्स बार है. हमें प्रूव करना है एक्स बार फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन. इसका मतलब वेरिएंस कितना आना चाहिए यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर बाय एन. सो वी विल मॉडिफाई अकॉर्डिंगली. यहाँ पे हमारा एन यहाँ पे है, तो अब हम क्या करेंगे, इस एन को इसके नीचे ले आएंगे, राइट. सो दिस बिकम्स, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करें. इसको मॉडिफाई करने के लिए देखो आपको क्या क्या चाहिए, 1 by sigma
अंडर रूट 2 पाई तो वैसे ही होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो इट मीन्स आपको यहाँ चाहिए सिग्मा बाय अंडर रूट एन। अगर मेरा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाय एन है तो स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए सिग्मा बाय, तो सिग्मा की जगह मेरा सिग्मा बाय अंडर रूट एन आना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। और दूसरा साथ में क्या आना चाहिए, अंडर रूट 2 पाई आना चाहिए। इज इट क्लियर? ये मैंने एक एक्सट्रैक्ट कर लिया, -1/2 सिग्मा स्क्वायर बाय एन इंटू एक्स बार माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर, राइट। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन आया और साथ में इसके आएगा डी एक्स बार। Here you will get dx bar, क्योंकि dy1 आपके पास y1 एक्चुअली क्या था, अंडर रूट n इंटू एक्स बार, राइट। सो dy1 आपके पास क्या आना चाहिए, अंडर रूट n इंटू डी एक्स बार। इसका मतलब अंडर रूट n जो है वो साथ लेके चल रहे हैं हम, अंडर रूट n इंटू डी एक्स बार dy2, अब वेरिएबल कहाँ से जाएगा, dy2 dy3 सोन अप टू dy, ठीक है। अब इसी स्टेप को मैं एक बार दोबारा कर देती हूँ। सो व्हाट वी हैव 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, ये था हमारे पास, राइट। ई को अभी मैंने स्प्लिट किया था, द वन वाज summation I running from e raised to power -1/2 sigma square, right, summation I running from 1 to n y, sorry 2 running from y to n y s। अब I is equal to 2 है, इसका मतलब इसके पास ये रहने चाहिए dy2 dy3 सोन अप टू dy n into e raised to power -1/2 सिग्मा स्क्वायर, एन ऊपर था वो मैं नीचे ले गई, ठीक है जी, एक्स बार माइनस म्यू इंटू होल स्क्वायर, राइट, इंटू अंडर रूट एन इंटू डी एक्स बार, राइट। अब हम इसको जो हमें जहां चाहिए वो हम वहां पे सेट करेंगे, राइट। सो अब ये जो है ये अगर एक्स बार डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, सो इट इम्प्लाइज 1/सिग्मा बाय अंडर रूट एन, ये तो हमें चाहिए अंडर रूट 2 पाई, राइट, ई रेज टू पावर -1/2 एक्स बार माइनस म्यू बाय सिग्मा अंडर रूट एन इट्स होल स्क्वायर। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख दिया और मुझे साथ में सिर्फ क्या चाहिए, डी एक्स बार। तो मेरा बेटा एक पार्ट कंप्लीट हो गया जो जिसमें सिर्फ वेरिएबल कौन सा आ रहा है, एक्स बार आ रहा है। नाउ आई एम कमिंग टू दिस वन, इसमें मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। The one is e raised to power -1 by, you can write completely e raised to power summation I running from 2 to n yi upon 2 sigma, yi square into 2 sigma square, इसके साथ कौन आ रहे हैं, dy2 dy3 सोन अप टू dy n, राइट। अब इसमें और इसको क्या चाहिए, इसमें बेटा वही सेम चीजें चाहिए, हाउ मेनी, एक कम है, यानी यहाँ पे आपको 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई रेज टू पावर n-1 चाहिए, ठीक है, क्योंकि कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, n-1, एक कम है n-1। सो आप इसको एक्सप्रेस करोगे 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई, दिस इज रेज टू पावर n-1, राइट। सो जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई रेज टू पावर n-1। अब अगला क्वेश्चन ये था कि ये वाला जो देखो, ये वाला जो अंडर रूट n था वो मैंने यहाँ पे फिट कर दिया टू मेक इट एज सिग्मा बाय अंडर रूट n, ठीक है। और इसमें हमारे पास टोटल n थे, एक इसको दे दिया और हमारे पास यहाँ रह गए n-1। इज इट क्लियर? सो टोटल जो पीडीएफ था वो 2 अलग अलग हिस्सों में बट गया, ध्यान से देखना है। therefore dg of the probability differential of the transformed variables is converted into two independent probability mass function of probability density function of two independent variables. The one is sigma under root 2 pi raised to power n-1 e raised to power minus summation I running from 2 to n
yi square to sigma square, ठीक है जी, into dy2 shown up to dyn into cross 1 by sigma by under root n into 2 pi under root 2 pi e raised to power minus 1 by 2 x bar minus mu by sigma under root n its whole square into dx bar. So therefore thus यहाँ पे therefore इस यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है? Therefore summation I running from 1 to n yi square which is equal to summation I running from 1 to n which is what is yi square? This is xi minus x bar whole square and this is nothing but n s square, right? And x bar is equal to summation I running from 1 to n xi divided by n. These are independently distributed. Therefore x bar follows normal distribution with mean mu, क्योंकि उसके e की पावर में देखो क्या आ रहा है, x bar minus mu by sigma under root n. इसका मतलब उसका मीन कितना है, mu है, और वेरिएंस कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाय इट्स स्क्वायर, ठीक है जी. And yi is following normal distribution with mean 0, right? क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, summation yi minus 0 by sigma minus 1 by 2 तो है, ये आ रहा है एक्चुअली, ठीक है जी. तो 0 हो गया इसका मीन और वेरिएंस हो गया सिग्मा स्क्वायर. Is it clear? So actually what we are finding, it implies summation I running from 2 to n yi square upon sigma square. ये क्या बनेगा? This is equal to summation I running from 1 to n xi minus x bar whole square divided by sigma. And this is, इसकी वैल्यू आपने अभी ऊपर लिखी ns square by sigma square, right? And this is the being the sum of squares of n minus 1 independent standard normal variate. This is being the sum of square of n minus 1 independent, I 2 से जा रहा है, not from 1, n minus 1 independent standard normal variate is distributed as chi-square variate with n minus 1 degrees of freedom. So यही हमने प्रूव करना था. The one thing I want to prove that x bar follows normal distribution with mean mu and variance sigma square by n, and n s square by chi-square sigma square follows chi-square distribution with n minus 1 degrees of freedom. So because n s square by sigma square, it is the square of standard normal variate, and square of standard normal variate is a chi-square variate. So that's all about this theorem on chi-square distribution. Now I'm coming to the next theorem. 15.7. If x is it's page number 15.23. If x is chi-square variate with n degrees of freedom, then prove that for large n under root of 2x follows normal distribution with mean 2n and variance 1. जब भी ये साइन आ गया n का, it means यहाँ पे ये mean को represent कर रहा है ये variance को, right? So you have to prove that this variable follows normal distribution with mean 2n under root 2n and variance 1.
Let's come to its proof. X is following chi-square distribution with n degrees of freedom. It means what is the expectation of X? This is n. What is the variance of X is equal to 2n, right? Now standard chi-square variate. कैसे बनता है स्टैंडर्ड वेरिएट सो z इज इक्वल टू x माइनस expectation of x upon under root of variance of x. This is x minus n upon under root 2n. This follows n 0 1, right, for large n. So you will write here for large n. Now what we want to actually we want to find the distribution of under root x. ठीक है अब हमने चलना कैसे है वी हैव मेक अ वेरिएट z is equal to x minus n upon under root 2n, right? So now we will consider एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे किस वेरिएबल की x माइनस इसी वेरिएबल की विच इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल z. सो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करिए दिस इज लेस देन और इक्वल टू n प्लस z इंटू अंडर रूट ऑफ 2n. हमने कहाँ पहुंचना है अंडर रूट 2x पे. हम यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे. सबसे पहले थ्रू आउट 2x से मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट ऑफ 2n. फिर हम स्क्वायर रूट लेंगे. अंडर रूट ऑफ 2x इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ नॉट दिस इज होल रेज टू पावर आ जाएगा 2n प्लस 2z अंडर रूट ऑफ 2n, राइट? So it implies this is probability of under root of 2x is less than or equal to 2n plus 2z under root of 2n raised to power 1 by 2. Expansion खोलने के लिए मुझे इसको 1 plus something में convert करना है. So we will convert it. This is less than or equal to under root 2n आप कॉमन लेंगे. जब आप under root 2n कॉमन लेंगे, right? और अंदर आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे 1 plus z. Then you will have here under root of 2 by n, right? Whole raised to power 1. Actually आपने 2n निकाला कॉमन. मैं एक और स्टेप कर देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए. This is under root 2x less. मैंने 2n कॉमन निकाला. अंदर क्या बचा 1 plus 2z under root of 2n divided by 2n. ये बचा. Whole raised to power क्या है 1 by 2. This is probability under root of 2x is less than or equal to this becomes 2n raised to power 1 by 2. This is 1 plus अब यहाँ रह गया 1 by under root 2n 2 into z upon under root 2n whole raised to power 1 by 2 और under root 2 अब यहाँ से आपका ये और यहाँ से क्या बच जाएगा इस जगह पे क्या रह जाएगा under root 2 रह जाएगा, right? So we are left with probability under root of 2x is less than or equal to under root of 2n अंदर बचा 1 plus z small z under root of 2n whole raised to power 1 by 2. यहाँ पे अब इसको expand करेंगे is less than or equal to under root of 2n. This is 1 plus z by under root 2n minus z square by पता ना आपको values नीचे आएगी 1 by 2 minus 1. You know how to open this kind of expansion. So this is z squared by 4n. So this becomes this is probability under root of 2x is less than or equal to. अब इसको अंदर लेके जाइए under root 2n this will be cancelled plus z. उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स छोड़ देंगे और सिर्फ आप लिखेंगे for large n. क्योंकि जब n tends to infinity ये सारा जो है पीछे वाला 0 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है जी. So this is probability under root of 2x minus under root of 2n is less than or equal to z for large n, right? Since for large n x minus n upon under root 2n follows n 0 1, right? Therefore from star क्या था हमारे पास स्टार था probability under root of 2x minus under root of 2n is less than or equal to z. From star we follow that
under root of 2x minus under root of 2n follows n 0 1 for large n. ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे क्या किया है मैंने. सो एक्चुअली 2x माइनस अंडर रूट 2n ये एक वेरिएबल है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि बेटा इसके नीचे क्या है, इसके नीचे आपके पास 1 है. ठीक है जी, वेरिएंस 1 है. और व्हाट इज द मीन, एक्स बार माइनस म्यू लिखते हैं आप. ठीक है, तो इट मीन्स ये है अंडर रूट ऑफ 2x माइनस अंडर रूट ऑफ 2n minus 0 divided by 1, this is less than or equal to z. So under root 2x minus 2n follows and 0 1. So it implies अब आगे चलेंगे, इसको और कवर करेंगे. अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद मीन 0 एंड वेरियंस 1, इट इम्प्लाइज अकेला अंडर रूट 2x, अब 2n जो है वो एडिड हो गया इसमें, follows normal distribution with mean 2n and variance 1. So that's all about this theorem. So you have to remember कि अगर x जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और अंडर रूट 2x फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा फॉर लार्ज n, अगर n की वैल्यू बड़ी हो जाती है, राइट. सो असिम्प्टोटिकली ला हम इसको इस तरह से इस तरीके से भी बोल सकते हैं. तो अंडर रूट 2x इज असिम्प्टोटिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन अंडर रूट 2n एंड वेरिएंस 1, क्योंकि यहाँ से इस एक्सप्रेशन से ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है. इट इम्प्लाइज ये वाला वेरिएबल जो ये वेरिएबल है, और क्योंकि ये वेरिएबल का नाम क्या है, z है, तो ये वेरिएबल इक्विवेलेंट है, लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये वाला वेरिएबल किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को. तो हमने इसको आगे ट्रांसलेशन हो गई, 2x और अंडर रूट 2n उधर चल गया, इसका मतलब ये मीन में कन्वर्ट हो गया, राइट. Now next theorem is establish the formula for recurrence relation between the moments for chi-square distribution, right? What formula we got? One, mu r plus 1 is equal to 2r into mu r plus n into mu r minus 1 with respect to the condition that r is greater than or equal to 1. So solution, if x follows chi-square distribution with n degrees of freedom, then mgf, mxt is, you know, expectation of e raised to power tx. This is 1 minus 2t raised to power minus n by 2 with respect to the condition that t is less than 1 by 2. So expectation of x we know that is n, मान लो इसका नाम हमने क्या रख दिया, mu. ठीक है जी. Now mgf about mean, क्योंकि म्यू आप निकाल रहे हैं, म्यू इज द mgf about mean. So this is mt, that is m of x minus mu of t, that is expectation of e raised to power x minus mu, right? And this comes out to be minus mu t, बाहर आ जाएगा, अंदर आपका रह जाएगा expectation of e raised to power tx. This is e raised to power minus mu t, और expectation of tx अभी आपने find out किया, वो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 minus 2t raised to power minus n by 2. Right now you will take the logarithms on both sides. On taking log on both sides. So what you will get, log of mt, this is equal to, so you when you will take log, e खत्म हो जाएगा, बच गया minus nt minus n by 2 log of 1 minus 2t. Differentiating both sides with respect to t. So this is 1 by mt into m dash t. So this is minus n minus and plus n by 2 into 1 over 1 minus 2t
and here you will have 2, right? आपका यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? सो दिस कम्स आउट टू बी 2nt अपॉन 1 minus 2t. It implies 1 minus 2t into m dash t. This is equal to 2nt into m. अब यहाँ पे लेबनिज थ्योरम जो है हम अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटिंग with differentiating r times with respect to with respect to t by Leibniz theorem. What we will get, जब आप इसको r times differentiate करेंगे, I'm just writing what you will get, 1 minus 2t mr plus 1t, right? Then plus r नीचे आ जाएगा r, और r यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव इसका -2, और यहाँ पे रह जाएगा mr, यहाँ पे t, राइट? दिस इज इक्वल टू दूसरी साइड पे आपका रह जाएगा 2nt mr प्लस mrt, राइट? और यहाँ पे एक रह जाएगा, जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे 2nr, एंड हियर इज वी हैव जस्ट अप्लाइड द Leibniz theorem on it. Now putting t is equal to 0 and use the relation that how we will find the moments in terms of by taking the rth derivative of mgf, right? T is equal to 0 and this comes out to be mr0. So when you will put, but I'm just writing the value mu r plus 1 minus 2r, mu r is equal to 2nr mu r minus 1, right? So yeah, when you will put the value here, t is equal to 0, 0 पे आपको वैल्यू मिल रही है mr0, नाम क्या है उसका, mu r. उसी तरह से यहाँ पे r plus 1 है, right? Here is minus 2r, here is आपकी t की वैल्यू 0 होगी, ये यहाँ से रह गया आपके पास 1. So this mr plus 1 0 पे यहाँ पे बन गया mu r plus 1 at t is equal to 0. This is minus 2r and this is at t is equal to 2. This becomes mu r. Then here this element will vanish because t is equal to 0. So here this becomes 2nr and this is mu r minus 1. So therefore mu r plus 1, this comes out to be 2r will be common, mu r plus and mu r minus 1, where r is greater than or equal to 1. So this is the required relation for recurrence between the moments in chi-square distribution. Now putting the value, put r is equal to 1 2 3, what you will get? So mu 2 is 2 and mu naught is taken as 1. Mu naught, mu 1 is always 0 and mu naught is always equal to 1. ठीक है जी? And what is mu 3? This is 4 mu 2 plus n mu 1. So you will put the value, you will get 8n. Similarly, beta, you will get mu 4 is equal to 48n plus 12n square. Then you will get beta 1 and beta 2. That will resemble exactly with the beta 1 and beta 2 of chi-square distribution. So that's all about today's lecture. I hope it is clear.